Hello, my dear student. Welcome to the next topic of Unit 1 in the Business Environment subject. That is a different environment of business. This lecture we will conclude in two part. This is a 6A part, means this 6 topic है, इसका पहला part है. Or this question can be asked in a different form. So question can be asked, different environment of business can be asked, and the question can be asked in the form of component of business environment, and means can be asked in a question that is factor affecting business environment, or what is the scope of business environment. So this question can be asked in a different form, or it can be asked in a form that factors influence the business decision. What are the factors who affect the business decision? So basically two factors in factor that influence the business decision, that is a internal environment and external environment. So what is a basically internal environment and external environment? Internal environment basically organization culture and vision missions, and we will discuss this topic internal environment in this particular lecture. Now the external environment I will conclude in the next lecture video. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी. सो ये जो आज टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस वी विल कवर इन टू पार्ट. Two type of factor होते हैं, internal factor and external factor. Business the factor which affect the business policy and business decision making, basically the internal factor, as well as the external factor. Internal factor are the controllable factor which are controlled by the organization, and external factor are uncontrollable factor which are not controlled by the organization. और यहाँ पर important thing is here, जो internal factor होते हैं basically create or impart the strength and weakness to the organization, or the external factor that it create a opportunity and threat to the organization. Now moving toward the internal environment होते क्या है, and internal environment create a internal strength and weakness for the organization. So let's start with the what are the factors, or what are the component that comes under the internal environment, that is a organization culture. Organization culture is basically widely acknowledged component of the internal environment of the business. The culture of the organization refer to a value system, learn ways that shape the collective बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कल्चर ऐसा होता है जिससे कि कलेक्टिव बिहेवियर डिटरमाइन होता है, शेप होता है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत अच्छा है, you can say the employees performing work in a business enterprise hold some value system that influence their working language, ethical standard, and working style and mutual interaction. A healthy culture shared uh, by all within the organization promote mutual cooperation and provide satisfaction among the employees, and it act as a internal strength of the business firm. तो ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो एक क्रिएट करता है अच्छा इन्वायरमेंट, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ होगी, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फ्लरिश करेगी, ज्यादा की स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है. मगर अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क एम्प्लॉइज हैं वो डिमोटिवेटेड रहेंगे, कल्चर में ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन कम होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा नहीं होगा, हेल्दी और कलेक्टिव बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, वीकनेस क्रिएट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Now moving toward the next point, that is the vision, mission, and objective. Vision, mission of organization is basically a roadmap, or you can say that blueprint of the organization. तो किसी भी organization का जो road map होता है, तो road map means what they have achieved, what their mission, what their vision. It basically a road map where they want to go. तो ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन और मिशन के थ्रू बताती है कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहती है, एंड इट्स दैट इज अ गाइड. इट्स ये बेसिकली विजन मिशन बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी, प्रायोरिटीज और पॉलिसीज को डिसाइड करती है. तो ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेंथ भी बताती है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ, तो ये क्रिएट अ स्ट्रेंथ for the organization. Or we can say that let's suppose take an example of Walmart store. Vision is to becoming the worldwide leader in the retailing. Walmart store क्या है, wanted to become a worldwide leader, and their mission is to help people save money so they live together. तो यहाँ वो बेसिकली ये उनके मोटिव है. Now moving toward the next point, that is top management structure. Top management basically are the people who take the decision
who are the basically decision making authority. अगर decision making authority basically experienced हुई and the experienced top management facilitate quick decision making and that act as a internal strength of the organization. तो top management जो structure होगा अगर बहुत अच्छा है तो it decide the success and failure of the organization. और top management अच्छा नहीं है तो failure of organization होगा, means weakness of the organization. तो top management एक ऐसा factor है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है, और अगर वो अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है, नहीं अच्छा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं है, देन इट क्रिएट अ वीकनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Now moving toward the next point, that is a human resource. Human resource basically are the employees or the workforce that work in an organization, and that is a great strength for the asset of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एसेट होता है वो क्या होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं. एंड ये वर्कफोर्स जो होते हैं बेसिकली एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी वर्क हो रहा है तो ये वर्कफोर्स के थ्रू ही होता है. अगर वर्कफोर्स बहुत टैलेंटेड है एंड यू कैन से द टैलेंटेड वर्कफोर्स विद द लीडरशिप स्किल्स एंश्योर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस लीडर नीड टू अट्रैक्ट एंड डेवलप एंड रिटेन द बेस्ट पीपल नेसेसरी टू सीज द best opportunity and to reduce the cost and optimize the performance. So that's why the organization can create workforce, ह्यूमन रिसोर्स और एज ए इंटरनल कंपोनेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकती है. और अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छी नहीं है तो इट कैन बी क्रिएट एज अ वीकनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ business company image. Company image is more important than a colorful logo, artistic design, and creative website. A company image is basically create as you can say that it influence the sales and profitability of the business. तो किसी भी business का जो sales and profitability totally depend upon the company image. तो company image or brand equity can prove a great strength of the company in the form of brand loyalty or repeated sales. तो इसीलिए brand image is one of the internal factor that help the organization in creating their strength. और अगर brand image अच्छी नहीं है तो it create a weakness. Now the miscellaneous factor, then another factor that is a comes under the business that also influence the decision making capabilities of the business. और ये ऐसे factor है जो कि business की decision making को भी capabilities को भी influence करते हैं, as well as it these are the component that create a strength and weakness for the organization. Like natural resources, अगर किसी भी कंपनी का natural resources wood, water and air and mineral resources और deposits से easily availability है तो ये एक strength create करेगा. और easily availability नहीं है तो it create a weakness. और अगर financial resources money और जो available है, cash है, security है, अगर कंपनी के पास ज्यादा amount में है then it create a golden opportunity or golden strength for the ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा. ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो बिजनेस है कैन इंक्रीज देयर साइज. और फिजिकल रिसोर्सेज मींस द प्रोडक्शन फैसिलिटी और द मशीनरी, आईटी, व्हीकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर बहुत अच्छा है तो देन कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग होगा एंड इट क्रिएट अ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर फिजिकल रिसोर्स अच्छा नहीं है तो नेट क्रिएट दिस फैक्टर इज बेसिकली कैन बी क्रिएटेड एज वीकनेस अगर ये अच्छा नहीं है. फिजिकल रिसोर्सेज मीन मशीनरी एंड आईटी. नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज अ रिसर्च डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज. Investment in research and development activities ensure the company ability to innovative product for meeting diverse expectation. अगर कंपनी जो है वो they putting their more effort on research and development capabilities of their own परफॉर्मेंस, अपनी खुद के काम में, अपनी परफॉर्मेंस में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्लूड कर रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है फॉर द कस्टमर डाइवर्स एक्सपेक्टेशन, टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो देन इट कैन बी अ स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. और अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं कर रही है तो देन द कस्टमर है दे कैन मूव टूवर्ड द अनदर कंपनी और अनदर बिजनेस. तो यहाँ पर ये सब फैक्टर्स ऐसे फैक्टर है जो कि कंपनी के लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं. सो द कंपनी हैज टू put effort, or they can control this factor if they putting their effort on internal environment. तो ये सब फैक्टर्स ऐसे फैक्टर. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, operational capabilities and structure and form and part of the business internal environment. It also influence the functioning of the business.
तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और कंपनी के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्रिएट करते हैं। अगर ये सब फैक्टर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो देन इट कैन बी क्रिएटेड एज स्ट्रेंथ, और अगर इंटरनल फैक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं इट कैन बी क्रिएटेड एज वीकनेस। तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी को इन अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैनर। इन अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैनर इट टोटली डिपेंड कि कंपनीज को कैसे लगती है। सो टुडे वी हैव कवर्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर I will cover external environment, that is a micro and macro. So this is for today now. Thank you, my dear student.